अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक दफ़ा फिर आप सबके साथ आसिफ, मुदस्सिर और मैं साइम हाजिर हैं। आज हम बात करने लगे हैं द स्टार्ट ऑफ एशिया कप के बारे में। एज वी स्पीक एशिया कप स्टार्ट होने लगा है। टुडे इज़ द 29th ऑफ अगस्त और कल से आई एम श्योर आप सबको इंतज़ार है। पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स फर्स्ट गेम अगेंस्ट नेपाल इन मुल्तान। सो आई एम श्योर आप सब एक्साइटेड हैं। तो इस एपिसोड में हम अम, अ, पाकिस्तान के लिए ये गेम कितनी इम्पोर्टेंट है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, और थोड़ा सा बिग पिक्चर हम एशिया कप के बारे में भी बात कर लेंगे। सो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ। आई थिंक ओवरऑल मेरी नज़र में, गिवन कि हमारी इतनी अच्छी सीरीज गई है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हम नेपाल के अगेंस्ट जो कि एक एसोसिएट नेशन है, और हम अपनी होम टर्फ पे खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल गेम नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। स्पेशली उनका एक स्पिनर जो है संदीप, ही इज़ अ वर्ल्ड अनाउंस स्पिनर। तो लेकिन ये है कि हमें होपफुली एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिलनी चाहिए। और वी इन माय ओपिनियन वी शुड बी गोइंग विद, खैर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात बाद में बात कर लेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक होपफुली इट शुड बी अ वन साइडेड गेम इन पाकिस्तान फेवर। यू नेवर नो, आई मीन वी हैड अपसेट्स इन द पास्ट, बट ऑन पेपर our team looks very strong and this should be a comprehensive win for us. आसिफ, आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है इस गेम के बारे में एंड ओवरऑल? इफ यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट किस टीम कॉम्बिनेशन के साथ कल हमें उतरना चाहिए? Thank you. Hane, I agree. Look, matches aren't played on paper, they're played on the field. We have had some disastrous losses to minnows over the years. Having said that, the Pakistan team is in a very good place. I don't know if you saw Rizwan meeting the Nepali players. They are very deferential to us, and so we can use that to our advantage. I think they're almost a little starstruck. So we have to, when we're on the field, all the gloves come off. We have to play full, act as if it's a final against anyone, and try and win convincingly. I'm very, very pleased to see we're having a major tournament match in Pakistan, in Multan, where hopefully Imam ul Haq's parents will actually get to go without hearing the words Parchi. And I think the combination that Pakistan has announced, my thought, because the question is, do you go with your best 11 or do you try some people out against a minnow team? And I think, you want to have your best 11 unless there is even the slightest hint of an injury, a niggle, something like that here and there. Even koi cheekly you take them out of the team, right? We need health is so important. There's a lot of cricket coming up. Remember, the goal here is the World Cup. But I think overall, the 11 that was announced is a very good team if they're all healthy. 100% go for it, go for the kill. And, this is going to be our launching point. Remember, 1 year ago exactly, the Asia Cup went reasonably well for Pakistan. Of course, we lost the final, but it was our launching point towards reaching the finals of the World Cup. It's sad that we lost in two finals, but overall, if you look back, that's a very good season that we had. We want to be able to do that and just take it one step further, both in the Asia Cup and in the World Cup. So this is our first step. You want to start on a very strong and emphatic positive. आपने बात की कि जो है प्लेइंग 11 जो है अनाउंस हो गई है। सो अपने व्यूअर्स के लिए, जस्ट इन केस समबडी इज नॉट अवेयर, ये हमारा ओवरऑल स्क्वाड है जी। इसमें जो एक चेंज आई है वो ये है कि तैयब ताहिर को हम रिजर्व में ले गए, उनकी जगह साउथ शकील आ गए। और कल के गेम के अंदर हमारी जो है मोरलेस जो है एक सेटल कॉम्बिनेशन के साथ वी आर ओपनिंग विद फखर एंड इमाम। बाबर कम्स वन डाउन, रिजवान probably comes two down, और फिर रिजवान के बाद फिर we have Agha Salman and we have Iftikhar, and then that's followed by Nawaz and Shadab, and then the three frontline pacers. So ये हमारा स्क्वाड है। मुदस्सिर, आप क्या कहेंगे? ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए था, या वुड यू हैव सपोर्टेड कि थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते या साउथ शकील को इंक्लूड कर लेते? आई थिंक वन ऑफ द बिग क्वेश्चन मार्क्स वाज कि आउट ऑफ आगा सलमान एंड इफ्तिखार एंड साउथ, we could accommodate two out of these three. So it seems that they are not going with South, they're going with Iftikhar and Agha. इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहले तो मैं ये स्क्वाड देख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि ये फ़हीम अशरफ
क्या कर रहे हैं स्क्वाड में इतनी स्लो पिचेस पे। सो दैट वाज अ स्ट्रेंज सिलेक्शन ये, क्योंकि फिर यही टीम आपको वर्ल्ड कप में कैरी करनी है, तो मुझे नहीं पता हाउ इज गोना सस्टेन लेटर ऑन। और आई ऑल्दो थिंक टू बी फेयर, उसकी आखिरी गेम जो हुई थी अफगानिस्तान की, उसने अच्छी बॉलिंग की थी ओवरऑल। यार अगर उसकी बॉल थी 127 kph, ठीक है, वो That बॉल, doesn't matter. It's the हाँ नहीं same. नहीं सुने, तो वो बॉल रिजवान के सर के ऊपर से गई है ना, तो इसका मतलब है कि पिच ही इतनी वो इतने उसमें वेरिएबल बाउंस था कि 120 वाला रिजवान के सर के ऊपर से बॉल जा रहा है, कि दैट टेल्स यू कि वो पिच का कमाल था सारा। तो फहीम It's अशरफ very बॉल देखा clear. हुआ है I interrupt. Like, it's very clear that the Pakistan management wants to have a fast bowling all-rounder, यार, right? जब वी यू हैड आमिर जमाल टू, फहीम अशरफ वो नहीं होते चले हुए कारतूस हैं। अब अगर हम खेल रहे होते इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, चलो आई थिंक न्यूजीलैंड के टूर में बाहर हुआ था जब इसको न्यूजीलैंड वालों ने हम लोगों को 350 रन मारना शुरू कर दिए थे। लेट्स सी एनीवे। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर वी विल ओनली हैव अ 15 मेंबर स्क्वाड, सो इनमें से एग्जैक्टली, दो तीन लड़के निकलेंगे। तो देखते सो हैं फहीम अशरफ सो लेट्स सी। या सस्टेन्स और नॉट, मगर ये कि सऊद शकील की है, दैट्स अ बिग न्यूज के, एंड राइटली सो, उसको आई विश ही हैड अनदर गेम, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर के काफी, आप कह रहे हो ना कि पर्सनली मेरा भी ख्याल है कि आगा और इफ्तिखार को इस स्टेज पे नहीं नहीं छेड़ना चाहिए। आई थिंक दे बोथ आर फाइन, स्पेशली इफ्तिखार को तो हर आगा तो फिर भी ही प्लेड लाइक 8 और 10 ओडीआई कंसिस्टेंट। आई थिंक ही प्लेड ऑल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और ये तीन तो 8-10 ओडीआई दे दिए। इफ्तिखार को तो उन्होंने न्यूजीलैंड वाले में भी उसको शुरू में बिठाया हुआ था, T20 में भी ही प्लेड ओनली वन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई थिंक ही प्लेड ओनली लास्ट टू, ही स्कोर्ड 90, वो जो मैच जिता रहा था वो ही कुडंट फिनिश। तो आई थिंक पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो, आई डोंट वांट टू मेस विद आगा एंड इफ्तिखार। ओनली जो सऊद की जगह मुझे बनते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि मेजोरिटी जो ओपिनियन है वो दे आर ओके विद रिजवान एट 4। तो अगर रिजवान अगर चौथे पे खेलेगा तो फिर सऊद तो कहाँ डालोगे, पांचवे छठे पे, एंड ही इज लाइक अ रोटेटर ऑफ द बॉल, ही इज नॉट अ बिग स्ट्राइकर। जैसे उस मैच में हुआ था, वो 35वें ओवर में आया, देन ही गॉट रन आउट बिकॉज ही कैन नॉट हिट ही सिक्सेस। वाज ट्राइंग टू हार्ड टू रोटेट द स्ट्राइक, जो रन नहीं भी था वो लेने की कोशिश कर इट रहा वाज था। टू लेट। अब हाँ, तो आई थिंक ही इज ओके टू कीप हिम विद द स्क्वाड। और दूसरा है, वो बहुत रेडिकल है, वो मेरा नहीं ख्याल बाबर या मैनेजमेंट वांट्स टू डू इट के यू जस्ट ड्रॉप रिजवान, एड प्रॉपर 4, और हारिस को खिलाएं छठे सातवें में। तो वो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा एनी टाइम सून। तो अच्छा, आई मेरा थिंक थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन था। सो इफ आई कंपेयर साउथ विद आगा सलमान एंड इफ्तिखार, तो अब आपको देखना है कि आपको प्लेयर से चाहिए क्या है। अगर तो आपको चाहिए कि जी यू नीड अ प्लेयर जो कि आपकी अगर कलैप्स हो रही है मिडिल ऑर्डर, तो उसमें स्टेबिलिटी ले आए, राइट, कि भी ये ना हो कि बाबर के बाद एकदम से स्लाइड हो जाए, तीन आपके इकट्ठे आउट हो जाए। तो या देन आई वुड प्रेफर साउथ, बिकॉज साउथ का टेस्ट एक्सपीरियंस भी है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। सो वो अपनी विकेट, उस दिन आउट हो गया रन आउट, लेकिन वैसे वो अपनी बोल्ड खोने के चांसेस कम है, विकेट देने के चांसेस कम है। सो दैट्स द यूटिलिटी ही ब्रिंग्स। इफ यू गोइंग फॉर समवन हु गिव्स यू अ हाई अपसाइड पोटेंशियल, या कि अगर कोई रन रेट आपकी, अगर आपको 8.5 9 की रन रेट हो गई हुई है, उस पर आपको खेलना है फॉर अबाउट 5-10 ओवर्स, so then the other two players, Agha and Iftikhar, they're better suited। उनका जो उनकी रेपुटेशन है, उनकी जो स्किल सेट है। कल की गेम के अंदर मेरा जो एक स्लाइट फेयर है कि जी गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं होना चाहिए, वी शुड विन स्मूथली, लेकिन अगर एक थोड़ा सा एक माइनर जहन में एक चीज आती है कि यार किस तरीके से हम हार सकते हैं, वो ये है कि अगर उनका जो संदीप, जो उनका मिस्ट्री स्पिनर है, वो अगर हमें एकदम से एक ऐसा स्पेल कर दे जिसमें हमारा मिडिल ऑर्डर को वो सफाया कर, तो उससे अपने आप को रोकने के लिए आई वुड प्रॉब्ली हैव प्रेफर्ड साउथ, जस्ट टू इंश्योर। क्योंकि अगर साउथ रहता है और हम 220 230 रन भी कर लेते हैं, तो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि हमने पॉल को 230 नहीं करने देंगे। सो वो मेरा था कि इंडिया के अंदर आई वुड, इंडिया की गेम के अंदर आई वुड एग्री, आई वुड गो फॉर द अपसाइड पोटेंशियल। क्योंकि इंडिया अगर हमें 300 या 280 या 290 का टारगेट देता है, तो देन वी नीड हार्ड हिटर्स। एंड चलो सो लेट्स, चलो इस तरह मैं लेकिन पूछता हूँ, साउथ साउथ चलो साउथ, चलो किस जगह, किसकी से जगह, साउथ साउथ खेल रहा है अभी, किस नंबर पे खिलाओगे उसको? एंड किसकी जगह? किसकी जगह खिलाओगे, किस मैं प्रॉब्ली खिलाता इफ्तिखार की जगह, कल कल की गेम।
मतलब है नेपाल की गेम में, बिकॉज मेरा खाली ऑब्जेक्टिव होता कि मैंने कलेप्स नहीं करना, एंड आई एम हैप्पी विद 230 टू 40 टू 50, बिकॉज मुझे ये चीज है कि यार जो एक वर्स्ट नाइटमेयर है आपका कि आप मिनों से सही है, अपनी कंट्री में हार समझ जाओ, वो गया। ना। तो वो तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ही शुड कम आफ्टर रिजवान। अब वो बैटिंग ऑर्डर अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। आइडियली स्पीकिंग आई एग्री विद यू, साउथ नीड्स टू बी यू नो बस कमिंग सारा आफ्टर बाबर। सारा प्रॉब्लम ही यही है ना। अब वो So, यू कैन, देयर इज नो स्पेस, ये क्योंकि अगर आप पांचवे पे खिलाओगे सऊद को तो इट ही विल बी स्टिल हैंडी। अगर फर्स्ट करो बहुत ही बुरा कोलैप्स हो जाए, ये किसी मतलब ऊपर के टॉप थ्री आउट हो जाए, तो सऊद और रिजवान कैन डू इट, ठीक है। मेजोरिटी गेम्स में ऐसा नहीं होता। और अगर फर्स्ट करो रिजवान ऊपर खेलता है चौथे पे, तो सऊद अगर 35-40 ओवर के बाद आ रहे हैं, देन इट्स टू लेट, देन यू नीड इफ्तिखार। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई डोंट थिंक yeah. मुश्किल है, आई थिंक इसकी जगह But नहीं है। and I disagree also कि जो है experience counts for something, right? When we've had collapses, if Takhar has actually been a good stabilizing force in collapses. So the idea of Saud coming in is great, but that's based on what? Test Yeah. cricket, which is different. He is a good cricketer and he has a good future, hopefully, with Pakistan, but unfortunately, he has not had the time to establish any credentials. He has not been there, done that Yeah. in one-day cricket. So what are we basing on? How can we assume that if there's a collapse, Saud is going to be the one to stand there and save us? I don't know that. I mean, he hasn't had, and it's not his fault. He hasn't had the opportunity to be in that situation. Is there enough time for us to try him in that situation and say, "Ki jo hai, based on this experience, we can keep him in future"? I think, unfortunately, there isn't enough time. I think he's great to be there, but I think his role has been relegated to if one of these two guys gets injured, he steps in. But at this time, I don't know that we have the time to experiment and tinker. If there was any match to do it, it would be Nepal. I get it, but Exactly. बट उस एंगल से आप देखें, आपने बात की कि जी ऑन बेस्ड ऑन व्हाट, उस तरह से देखें तो आगा सलमान का भी कुछ ज्यादा तो सैंपल साइज नहीं है हमारे पास अभी। but he I has agree, मगर situations yeah, in and outside of Pakistan and the subcontinent, and we हाँ, have all doubted him. Every one of us has doubted him, and he has proven us wrong. In the few opportunities he has had, boy, has he grabbed those opportunities and run yeah. with it to where every single doubter has more or less stopped and said, "Yaar, ye नहीं, banda but he's proven आगा himself." का रोल इज डिफरेंट ना, ही इज प्लेइंग लेट। अब सऊद अगर खेलेगा तो छठे नंबर पर क्या क्या करेगा? सऊद इज सेम प्लेयर लाइक प्रीटी सिमिलर टू फवाद आलम। उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत, अगर उसे You know, 90 सुपर हो जाएगा नहीं। but we ही don't know that. He एग्जैक्टली, could be a very good one-day player, but we don't know because he hasn't had the chance. या बट हिज आई मीन लिस्ट डोमेस्टिक रिकॉर्ड उसका अच्छा है राइट, बहुत वनडे जबरदस्त में, है। बट बट Yeah. आई नो हिज स्टाइल एक्चुअली, तो लिस्ट है तो जबरदस्त है। प्रॉब्लम यही है कि फिर उसके लिए जगह, अब हमने वो अफगान सीरीज में खिलाया नहीं। हु नोज, ही वुड हैव स्कोर्ड Yeah. 250s। और तो अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो तो ही शुड बी ऑन नंबर 4, मगर मुझे पता है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इज नॉट गोना एग्री के रिजवान को ना लोग, ही इज नॉट अ वाइस कैप्टन, मगर वो एक तरह से रिजवान, बाबर, शादाब, शाहीन, ये 3-4 लोग ना वो लीडरशिप में है टीम के। So Rizwan is the flip side of the argument. अच्छा अच्छा, सऊद को उन्होंने, आई मीन आई एम ग्लैड दे पिक्ड हिम फॉर द एशिया कप, पहले वो रिजर्व में था, बट व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस डू यू थिंक कि भाई तैयब ताहिर को कोई चांस नहीं दिया या और साउथ को एक गेम दी, उसके अंदर भी स्टार्टेड ऑफ, तीन चार बिल्कुल। बॉलिंग खेली, अच्छे खेले, रन आउट हो गया। सो So व्हाट्स द लॉजिक, आई मीन I व्हाट think logic एक्सप्लेन? has in the back of the mind, he's one of the best uh, batsmen against spin, मगर उस तो बेचारे पहले की रख लो। नहीं है। तो मे बी दे आर होपिंग कि कोई इंजरी होती है, खुदा ना खास्ता है, कुछ होता है, हाँ, तो जैसे हारिस को खिलाना पड़ गया, तो हाँ, you can play Saud up and Haris at the back। अगर रिजवान नहीं he is, खेलता है तो he is he the both can insurance play। policy. He is the I insurance think policy for middle order. yeah, so it सही सही। yeah, अच्छा, कल अगर हम नेपाल के अगेंस्ट टॉस जीतते हैं तो शुड वी यू नो ट्राई चेजिंग? हिस्टोरिकली अभी चेजिंग मैंने अफगानिस्तान के against हमें इतना, और हमारा चूंकि वी आर गुड एट सेटिंग टारगेट्स एंड डिफेंडिंग देम, वी शुड गो फॉर दैट अप्रोच। I mean मेरे ख्याल से तो पहले खेले में जरा 300 करके दिखाएं, फिर so 3.5। और फिर उनको 100 के अंदर अंदर लपेटते Yeah. हैं। We need, we talk about our batsmen. Some of them need a good long innings. Let's bat it out. Let's bat out 50 overs and essentially bat them out of the match.
And then, Exactly. then our pacers don't even have to bowl their full quota of 10 overs. We have so many backup spin options who we can use because Right. preserving health is important as well. I think historically, Multan mein chasing is a bit more difficult. I mean, usually teams that win the toss elect to bat first. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी आप चूंकि आपकी एक थोड़ी सी वीकनेस चेजिंग में रही है, इवन अफगानिस्तान के गेम के अंदर द गेम दैट वी स्ट्रगल ऑलमोस्ट लॉस्ट वाज द वन वी वर चेजिंग, कि आप अपने आप को जरा प्रैक्टिस के लिए जानबूझ के चेस करो. बट आई एग्री, आई मीन वी शुड बी डूइंग दैट. इस वक्त शुड बी अबाउट demolishing the opponent, setting a strong signal to the rest of the world, we are here and we mean business and we're going to be ruthless. We'll have plenty of opportunity to chase between now and the World Cup. It'll come. So. It will come. And not for our own choice, but people will force us to. They know us. They know our weaknesses as well. Challenge, thank you very much. So this was our episode on the start of the Asia Cup and particularly the first game against Nepal. Hopefully Pakistan has a resounding victory and we do very well. तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज.